So in previous class, we have discussed the types of evaluation: placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation, and summative evaluation. So all of you understood the concept of evaluation, or once again I can repeat in briefly to refresh the concept. If you want, I will just summarize the concept, because we will continuing this concept. If you already revised by seeing recording or reading material, I will move on. Otherwise, I will briefly explain the evaluation once again. Measurement and evaluation. Hello? All of you know understood the concept of evaluation. Concept पता हुआ तो मैं आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो otherwise I will explain once again with some different example. Can anyone tell what is evaluation in general? जनरल वर्ड्स में, जनरल कॉन्सेप्ट में आप क्या समझ गए एवेल्युएशन का मतलब? एजुकेशन कंटेक्स्ट में और अदर कंटेक्स्ट में नहीं पूछ रहे, इन जनरल व्हाट इज एवेल्युएशन, व्हाट यू थिंक अबाउट द एवेल्युएशन? So I will give one scenario, one example in general way to understand the evaluation. So evaluation, I am telling evaluation concept in general. समझने के लिए मैंने evaluation के बारे में repeat कर रहा हूँ. For example, एक क्रिमिनल है, इन जनरल लॉ को इन कोर्ट सीन को लेके मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ. सो एक क्रिमिनल है, मर्डरर है, वो उनके ऊपर क्या है, क्रिमिनल केस, और ये मर्डर किया बोल के उनके ऊपर केस है. सो हियर द मर्डरर और किलर को हमने क्या करना पड़ता है, बाय लॉ कोड्स, इसके वजह से हमने एवेल्युएट करते वेदर ही इज रियल किलर और नॉट. इन द ब्रॉडर सेंस, इन सिंपल मीन्स, evaluation means to judge that person whether he is a killer, whether he is a murderer or not. So that is the evaluation. ये evaluation कैसे होता है? Simply I will explain. In the context of education का terms use करके मैं explain करता हूँ, just for understanding. For example, any person killed or murdered, or he is accused. So क्या होता है, पहले क्या होता है, मेजरमेंट कितना लोगों को मारा है, कितना लोगों को मर्डर किया, एक मेजरमेंट करते हैं. 3 लोगों को मारा है, 10 लोगों को मारा है, 4 लोगों को मारा है, एक मेजरमेंट करते फर्स्ट. बाद में क्या करते हैं, द एविडेंसेस, डेटा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट मर्डर केस, क्या क्या एविडेंस मिला है, फैक्ट्स मिला है, इंफॉर्मेशन मिला है, ये सारे एक जगह इकट्ठा करते लायर लोग, एंड दे विल प्रोड्यूस इन द कोर्ट एंड वाद करते हैं, सी दीज आर द इंफॉर्मेशन, एविडेंस, फैक्ट अवेलेबल, दिस पर्सन इज कमिटेड द मर्डर. सो ये सारे एविडेंस, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स को एक यूनिफॉर्म ऑर्डर में वो इकट्ठा करते हैं. सो उसका आधार पर एक जजमेंट ले सकते जज को. सो दैट इज द असेसमेंट. असेसमेंट इज ए प्रोसेस. आफ्टर दिस असेसमेंट, he will provide all the information, data, everything in the one particular discipline manner में देते. So based on this, the judgment can be taken. It is this assessment is very near to judgment. So after this assessment, this scenario, the judge will give the judgment. He will add the value or pass the judgment.
that completes the entire valuation of that person. Yes, this person is committed murder and he is a sentence for the some years, and any type of should be given by the judgment. But what I am trying to telling is, so measure, assessment, judgment आपको ऐसे समझना है. Sometimes the assessment and judgment दोनों को इंटरचेंज क्यों कर सकते हैं हम? मतलब देखो, अगर ने ये मर्डरर का बारे में सारे इंफॉर्मेशन एविडेंस हमने एक तरीके से जमा किया है लॉयर ने, और वो जस्ट बाय सीइंग दैट इंफॉर्मेशन एविडेंस दैट कलेक्शन से हमको इन्फॉर्म होता है जजमेंट क्या आने वाला है. इवन जज इज नॉट गिवन द जजमेंट. अगर फ्राइडे है, आज केस खत्म हुआ है, सारे वाद विवाद हो गए, सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट्स ऐसे दिया है लॉयर ने, सो बेस्ड ऑन हिज आर्गुमेंट एंड एविडेंस वी कैन जज. हाँ, ये केस साबित हो सकता है. दैट इज द इट इज नियर टू जजमेंट, बट द जजमेंट इज पोस्टपोन टू मंडे जजमेंट आने वाला है, फिर भी अभी असेसमेंट हो गया है. सो इन प्रोसेस आल्सो इन द असेसमेंट इट इज वेरी नियर टू जजमेंट. हम क्या बोल सकते हैं? मंडे जजमेंट यही आने वाला है. बेस्ड ऑन व्हाट आर द इंफॉर्मेशन एविडेंस that collected in the systematic manner. So that's why sometimes what happens, the assessment and evaluations are interchangeable, because based on the assessment only we will infer the add the value or give the judgment. That's why, but the process completes when the judge gives the judgment after the hearing all this process. That is the complete evaluation. So it will go on this particular manner. But sometimes we will use the assessment is also assessment and valuation as a interchangeable, because of assessment is very near to the taking the judgment. That's why even though if you are using interchangeably measurement and evaluation, it sense that they conveying the same meaning. That is the concept. But if you ask what is the assessment and evaluation, whether they are synonymous, not synonymous, because assessment is nearer to, it gives the closer information to take the judgment, but the judgment we are not given exactly. So that is the concept. Whether you understood what is the measurement, assessment and evaluation. Evaluation completes after the giving the judgment. एक केस कब कंप्लीट होता है? आफ्टर द असेसमेंट, वाद प्रतिवाद सारे एविडेंस देने के बाद कब जज ने फाइनल जजमेंट देता है, तभी दैट एवेल्युएशन विल कंप्लीट. सो दैट इज द concept behind this thing. All of you understood what I have given, just for similarity to understand the measurement, assessment and evaluation. So judgment is important, but sometimes we use the assessment and evaluation as a interchangeably, because in evaluation process only the assessment will comes, but evaluation is the final, assessment is in the process. So that's why these both can be interchangeably using in some books or in some concept. So because assessment is very near to the evaluation, just assessment helps to give the value judgment. That's why sometimes assessment and evaluation is used interchangeably, but assessment is in process. अभी process बाकी है evaluation के, but assessment में है बोले तो it is in the process, but evaluation हो गए मतलब it is the end, हो गया, that process का पूरा function हो गया. That is the concept of evaluation. Evaluation मतलब evaluation contains all these three things, then only we can call it as a evaluation. Other two meaning is, इसका meaning क्या होता है? Sometimes what happens, evaluation मतलब here देखो, measurement किया, direct judgment pass किया, then also some circumstances we will call it as a evaluation. For example, अगर एक सिमिलरिटी एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आपने मिलिट्री और पुलिस का ज्वाइन होने वाला है, फिजिकल टेस्ट में क्या रहता है, हाइट शुड बी 150 सेंटीमीटर होना है, वेट शुड बी 60 केजी होना है फॉर मेल कैंडिडेट. अगर कोई कैंडिडेट का हाइट 140 सेंटीमीटर है, वो मेजर किया उनका हाइट
वेट कितना है 40 kg है, so directly they take the judgment, this candidate is not fit for the this post or this selection process, they are not assess, further assess होने का जरूरत नहीं हुआ उसको, डायरेक्ट मेजरमेंट किया and based on the measurement they jump the judgment and they evaluated that person. Sometimes it is possible, whether you understood or not. Hello, hello, all of you tell yes or no, मैंने क्या समझा रहा हूँ Yes, आपको sir. समझ Yes, में sir. concept? Okay. Sometimes what happens, even by measurement only, if you take the judgment, that is also evaluation. Not for all circumstances, some circumstances में ये हो सकता है. That's why evaluation is equal to measurement plus value judgment. As I told in the example, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट इतना होना था, वेट इतना होना था, मेजरमेंट किया, डायरेक्टली बेस्ड ऑन दैट मेजरमेंट ओनली दे हैव गिवन द जजमेंट एंड दैट कंप्लीट्स द एवल्यूएशन. फर्दर आपको टेस्ट लिखना है, वो असेस करने कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट मेजरमेंट प्लस जजमेंट दिया है, दैट कंप्लीट्स द इवैल्यूएशन, द कैंडिडेट इज आउट ऑफ द दैट एंटायर प्रोसेस. Sometimes some scenario what happens, assessment plus value judgment. Assessment value judgment, in just for understanding I am giving some hypothetical scenario or some examples. For example, कभी कभी क्या होता है, आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. मेजरमेंट नहीं होता है बट असेसमेंट मतलब इनका कैरेक्टर मूवमेंट, इसका इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन क्या किया एग्जैक्टली वो उसका मेजरमेंट नहीं मिलता है. बेस्ड ऑन हिज असेसमेंट ओनली इफ यू ऐड द जजमेंट, then that is also called evaluation. Just simply मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए सोच रहा हूँ, whether it is correct or not, but आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. रिसेंटली क्या हुआ, मैंने सावरकर मूवी देखा. सावरकर मूवी में क्या है, वीर सावरकर ने क्या करते, उनका एक अभिनव भारत कुछ तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते, उसका उद्देश्य है स्वतंत्र संग्राम में ये करने के लिए वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को सब लोगों को बोलते जाते क्या करने, हम भाई क्रांति से स्वतंत्र को लेना है. सो ये लंदन को जाते, लंदन में क्या करते, उधर बॉम्ब बनाने का सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स और गन्स को सप्लाई करते रहते. एंड लॉट ऑफ हिज फॉलोअर्स इन ऑर्गेनाइजेशन में होने वाला आदमी क्या करते, ब्रिटिश ऑफिसर्सों को किल करते जाते. दे आर उन लोगों को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पकड़ते, बट अब पकड़ा हुआ कोई भी इंडियन दिस फाइटर सावरकर का नाम नहीं बोलते. एंड सावरकर डायरेक्टली कोई भी एक्टिविटी में डायरेक्टली पकड़ा हुआ नहीं रहते. सो दे कांट मेजर ये पर्सन कितना लोगों को मारा है, क्या करे, मेजर करने को नहीं हुआ, बट इनका मूवमेंट, ये इनका एक्टिविटीज को चेक करने के लिए एक आदमी, ब्रिटिश आदमी, इनका सारे एक्टिविटीज तो वो गुप्त से देखते रहते हैं. सो बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट दे डायरेक्टली गिव द पनिशमेंट टू द सावरकर. कोर्ट में ये होने के बाद सावरकर ने बताते मेरा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, मैं किसी भी इसमें नहीं, आप कैसे जेल सकते. फिर भी वो लोग क्या करते, जजमेंट देता है, ही इज डेंजरस, ही इज टेकिंग दी, ऐसे एक्टिविटी हो रहा है, ही इज डेंजरस फॉर आवर ये बोल के. सो इधर मतलब क्या होते, कभी कभी हम मेजर नहीं कर सकते, बट असेस किया वो लोगों ने सावरकर का मूवमेंट, इनका एक्टिविटीज देखे, एंड दे गिव द जजमेंट. सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल विदाउट मेजरमेंट आल्सो, बेस्ड ऑन असेसमेंट, इफ यू गिव द जजमेंट एंड मेक द एवल्यूशन, दैट पीपल ने, वो लोग, सावरकर ने किसी ऑफिसर को जाके मारने तक वेट नहीं किया, डायरेक्टली जजमेंट करके एवेल्युएट कर दिया, ही इज ए टेररिस्ट बोल के वो घोषित कर दिया. सो समटाइम्स, बट एजुकेशन फील्ड में कैसे ये कर सकते हैं, व्हेन वी प्रैक्टिस, व्हेन वी कम टू द एग्जैक्ट फील्ड, देन ओनली वी विल अंडरस्टैंड. बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये भी पॉसिबल होते हैं. बट एवेल्युएशन डन बाय डायरेक्ट मेजरमेंट प्लस जजमेंट, एवेल्युएशन डन बाय असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट से, if evaluation done by measurement assessment then add the judgment, this is the most strongest evaluation. अगर evaluation इस तरीके से chronological order से हो गया, that evaluation is the very strong evaluation. But these both are also evaluation बोल सकते हैं, लेकिन the evaluation done by in this measure, पहले measure करना है, as I explained in the first example in court में,
कितना मर्डर किया है, assessment evidence of documents, then giving the judgment. That gives the strong evaluation or strong judgment. That is the concept of evaluation and assessment. Now all of you understood the concept of evaluation. What is evaluation? आपको concept समझ में आना चाहिए बस. Then we will move on next concept. अभी आपको एक आइडिया आ गया, पिक्चर आ गया, व्हाट इज एवेल्युएशन. हेलो. कभी कभी डायरेक्ट मेजरमेंट के जजमेंट दिया तो भी एवेल्युएशन बोलते हैं, कभी कभी असेसमेंट के साथ डायरेक्ट जजमेंट दिया तो भी ये होता है. कभी कभी क्या होता है, हमने क्लास में बच्चों का एग्जाम नहीं लेते, मेजरमेंट नहीं करते कुछ भी, लेकिन उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, उनका क्लास अटेंडिंग, उनका सिंसियरिटी देके एक जजमेंट देते हैं, उनका एवेल्युएट करते हैं हम. कभी कभी कुछ मेजर नहीं करते एक्चुअली, बट बेस्ड ऑन हिज बिहेवियर सम जजमेंट और सम एवेल्युएशन, दिस स्टूडेंट इज गुड बैड, ऐसे वो भी पॉसिबल हो सकते. दैट इज आल्सो एवेल्युएशन. दे आर मेथड्स. दैट इज द, बट व्हेन वी मेजर, assessment and then give the judgment, that is the strongest one or most superior one type of evaluation. That is the method of evaluation. Now types of evaluation में क्या होगा, based on quantitative, written examination, oral examination, practical examination. Qualitative techniques में by observation, by checklist, by rating scale, by cumulative. As I explained, cumulative means add on plus करते जाते, rating means एक scale रहते हैं उसको rate करते जाते, because these are qualitative techniques. checklist, observation and intervention. qualitative techniques use किया कर रहे हैं या quantitative techniques use करें. quantitative as you know that is measures or numbers. written examination 100 marks के लिए कर रहे हैं या 50 marks के लिए कर रहे हैं. oral examination also. So measurement will, quantitative outcome will come in quantitative technique. Qualitative terms will come after the qualitative technique. So as I told, placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation, summative evaluation. I will use this some IGNOS notes, then I will explain. For better understanding, because these concepts are important. Based on this, so all of you are visible to see the screen. Yes, approach to evaluation, placement, formative, diagnostic and summative. एवेल्युएशन का अप्रोचेस में क्या है, हमने प्लेसमेंट एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन एंड समेटिव एवेल्युएशन पढ़ाई किया था. दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ द एवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन. अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट टाइप ऑफ एवेल्युएशन करते हैं, डिफरेंट फेजेस में. दैट इज दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द विच फेज में हम एवेल्युएट कर रहे हैं. So assessment is conducted in different phases of teaching learning process. We carry out assessment before the beginning of teaching learning process, during the learning process and end of the instructional process. Approaches of evaluation on the basis of its types and function can be classified as below. First one is placement evaluation. What is placement evaluation? We will see. Then formative evaluation, diagnostic evaluation and summative evaluation. Each of 4 types of evaluation serve different purposes. इसका पर्पस अलग अलग है in the teaching learning process. Evaluation start with placement evaluation. In the teaching learning process में it is always start with placement evaluation and ends with summative evaluation. End में होने वाला कोर्स का एंड में होने वाला evaluation क्या रहता है, summative evaluation कहते हैं. At the beginning, starting में हम placement evaluation करते हैं. All 4 types of evaluation are important and are unique in their functions. The 4 types of evaluation and their functions are diagrammatically presented here. So see, before instructional process, the placement evaluation will be done to know the entry behavior. As I explained, अगर कोई कोर्स अगर हमने सेकेंड ईयर के बाद
हमने अगर मेडिकल को आना है, मेडिकल फील्ड को आना है, हमको ऑल इंडिया लेवल का नीट एग्जाम लेता है. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए entry behavior, to know the knowledge, to know the placement evaluation बोलते. Before actually starting the course, we will do the evaluation. That type of evaluation we call as a placement evaluation. That may be to know the knowledge of that student or learner before actually the course has started. Course का material, course का syllabus चालू होने से पहले, or to entry to that course, whether this learner is how much knowledge is there, whether he is eligible or not. This type of evaluation we do, that is the placement evaluation, to know the entry behavior. कोर्स को आने से पहले और कोर्स आने के लिए उनका बिहेवियर और उनका नॉलेज क्या है वो चेक करने के लिए हमने प्लेसमेंट एवेल्युएशन करते हैं. डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट विल कम अंडर द प्लेसमेंट एवेल्युएशन, वी विल सी इन डिटेल. ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, एक्चुअल कोर्स चालू हो गया, हमने वो एमबीबीएस ज्वाइन हुआ और बीएमएस ज्वाइन हुआ और बीएचएमएस ज्वाइन हुआ. ड्यूरिंग दैट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस we will do the formative evaluation to know the mastery in the content, how much the student is learned, whether our outcomes, learning teaching objects are coming or learning objectives are achieving or not, to know the mastery in the content. वो बच्चे स्टूडेंट्स कितना लर्न कर रहे हैं, कंटेंट को कितना मास्टरी अचीव कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए हमने ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वी विल डू द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. अगर इस पे फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में कोई कोई बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे, कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, बार बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन द सेम सब्जेक्ट, देन वी विल do the diagnostic evaluations to solve the learning difficulties. Why students that subject में, that concept में बार बार फेल हो रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं, we will do the diagnostic evaluation. It is also during the instructional process. Then after the instructional process, after the course, end of the course, first BMS or first phase, first year of that particular course, we will do the summative evaluation. Summative evaluation is फाइनल एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम रहते हैं ना, उसको हमने समेटिव एवेल्युएशन क्यों करते हैं हम, टू सर्टिफाई द लर्नर. क्या सर्टिफाई करते हैं, ही इज पास द बीएमएस. बीएमएस का सारे फर्स्ट ईयर बीएमएस का सब्जेक्ट में ये मास्टरी है, सब सब्जेक्ट इनको पता है, ये सर्टिफाई दिया जैसे होते हैं. समेटिव सम करते हैं सारे ईयर का इस लर्निंग को सम करके फाइनल वी विल डू द समेटिव एग्जाम एवेल्युएशन. दैट इज द आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. फर्स्ट ईयर बीएमएस खत्म होते, सारे टीचिंग प्रोसेस खत्म होते, देन वी विल डू द समेटिव एवेल्युएशन टू सर्टिफाई द लर्नर. So one by one we will see the because these are important concepts, that's why I am repeating. Placement evaluation can be defined as type of evaluation that provides information to the teachers about learners to whom she deals with relating to their existing knowledge and experiences based on the teachers decides to teach new knowledge. अगर बच्चे बीएमएस में एंट्री किया इन द फर्स्ट क्लास में, हम स्टूडेंट्स को असेस करते, एवेल्युएट करते टू नो दी उनका नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है बच्चों का रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स. ये क्यों हेल्प करता है, टू डिजाइन द टीचर को न्यू नॉलेज और न्यू थिंग को टीच करने के लिए हेल्प करता है. बच्चों का नॉलेज कितना है, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी तक बिफोर स्टार्टिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स, दैट विल हेल्प फॉर द टीचर. देन प्लेसमेंट एवेल्युएशन इज कंडक्टेड बिफोर अंडरटेकिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज. इट यूजुअली जनरली करते हैं ना, हम कोई नया टॉपिक शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछते हैं, आपको इसका बारे में कुछ पता है, कैन एनीवन टेल. अगर हमने न्यूट्रिशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले पूछता है बच्चों को, एनीवन नो अबाउट न्यूट्रिशन, एनी नॉलेज. सो कोई कोई बच्चा बोलते हैं न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशन. सो हमको एक आइडिया मिलता है क्लास में, हाँ इतना बच्चों को पता है. सो बेस्ड ऑन दैट थिंग वी विल डिजाइन द क्लास आर पर्टिकुलर नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज. It is basically used to entry behavior of existing knowledge of the learners. Existing knowledge क्या है
वो पता चलता है. Another purpose of placement evaluation is know to whether learner is able to acquire the new learning experience based on his or previous knowledge. और उनका नॉलेज के ऊपर हमको ये भी जज कर सकते हैं हम क्या टीच करने वाले आगे, ये इसको समझते या नहीं समझते, वो भी हमको पता चलता है. अगर आप कुछ टॉपिक के बारे में पूछ रहे हैं, यानी नॉलेज है, आपको कुछ पता है, कोई बच्चा कुछ नहीं बोल रहे और कोई कोई बच्चे पूरा गलत बता रहे, एंटायरली दे आर टेलिंग डिफरेंट थिंग्स, दैट इज नॉट एट ऑल कंसर्निंग विथ अवर सब्जेक्ट और कंटेंट. देन आपको क्या समझते, these whatever I am going to teach, these students or learners will not able, ये समझ नहीं सकते ये कॉन्सेप्ट को, ऐसा भी जजमेंट, ऐसा भी थिंक करने के लिए हेल्प करते. द keyword which is used for placement evaluation is the entry behavior. Assessment of entry behavior is done just before teaching start. In the teaching learning process, before teaching a new topic, teacher should know the previous knowledge of the students. Once again what I have told, अगर कुछ नया टॉपिक शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस नॉलेज क्या है सब्जेक्ट का बारे में पूछते हैं ना, दैट इज द placement evaluation. Then the self teacher to organize teaching learning activities according to previous knowledge of the learners. अगर बच्चों को ऑलरेडी पता है उसका बारे में, मैंने वो पता हुआ मैटर ज्यादा नहीं बोलते, अलग न्यू कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं मेरा स्ट्रेटजी बदलते. अगर बेसिक ही पता नहीं है, देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ओनली. सो बच्चों को बेसिक से ही प्रॉब्लम है, ये समझ में आते हैं मुझे प्लेसमेंट एवेल्यूएशन से. देन माई टीचिंग एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंटायरली डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर. अगर मैंने आपको स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछा, आपको वात पित्त कफ दोष के बारे में पता है, श्लोक आता है, देन ओनली आई कैन मूव दी टाइप्स एंड अदर अप्लाइड थिंग्स. अगर बच्चों को वात पित्त कफ का ही बारे में पता नहीं है ठीक से बोल के मुझे समझ में आ गया, देन I once again I will teach the basic things, then I will go the higher level things. It will help to teacher to organize the teaching learning activities according to the previous knowledge of the learner. The technique of introducing lesson by asking certain questions from the previous knowledge of the student is related to topic taught or by any other techniques like demonstrating something, telling a story, doing a role play, etc. Whether you may ask anyone know about this topic, or you may assess or evaluate that by different techniques, by using different techniques like demonstrating something, or after the entering class you will do some demonstration, then you will ask what is this thing, what I have done. अगर बच्चों को वो कॉन्सेप्ट पता है तो बताते सर आपने ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया. सो इट कैन बी, यू कैन evaluate whatever different techniques you can use like demonstrating, or you can tell a story and you can ask the question based on the concept, doing a role play, whatever thing. अलग अलग लेवल ऑफ टीचिंग एजुकेशन में अलग अलग तरीके का टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. अगर बच्चों में छोटा बच्चों है उधर अलग टेक्निक यूज करते, कुछ रोल प्ले करते आप, राम का रावण का रोल प्ले करके, ये कौन है आपको कुछ पता, हाँ सर ये रावण है, ये राम है, बच्चे आपको आंसर बोले तो हमको पता चलता है हाँ बच्चे को थोड़ा नॉलेज है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में. ऐसे हम एवेल्युएट कर सकते हैं. डिफरेंट होते हैं कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, आप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं एंटायरली डिपेंड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट. और आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ प्लेसमेंट एवेल्युएशन, दीज आर ऑल example of the placement evaluation. In other way, conducting a type of entrance examination for selecting learners to particular course is also example of placement evaluation. See this sentence. हमने क्या अभी तक प्लेसमेंट एवेल्युएशन किया, उसके अंदर ये भी शामिल होता है. दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन अंडर द प्लेसमेंट एवेल्युएशन. अगर हमने कुछ एंट्रेंस एग्जाम लेता है टू सेलेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, अगर मेडिकल ज्वाइन होने के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल का नीट एग्जाम लेते, whether he is suitable to do that course or not. In other way, conducting a type of entrance examination for selecting learners to a particular course is also example of placement evaluation. नीट लेते बहुत लोग बच्चे नीट लिखते हैं, बट कौन कौन एलिजिबल होते, दे आर एंटर इनटू द मेडिकल फील्ड. कौन नहीं एलिजिबल होते, दे आर नॉट एंटर द मेडिकल फील्ड. तो उधर दैट इज आल्सो ए प्लेसमेंट एवेल्युएशन, वेदर दे आर फिट फॉर दिस कोर्स और नॉट. स्क्रीनिंग कर लिया, दैट इज आल्सो, और हमने एवेल्युएट कर लिया, दिस इज आल्सो कम्स अंडर द प्लेसमेंट एवेल्युएशन. अगर क्वेश्चन पूछा गया
अगर ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम करते हैं हमारा आफ्टर BAMS, उसमें कौन पास होते हैं, एंट्रेंस क्लियर करते हैं, वो आर दैट आर दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. दैट इज आल्सो प्लेसमेंट evaluation, whether that particular graduate fit for PG or not. हमने एंट्रेंस लेते, उसका आधार पर select the learners to a particular course is also example for the placement evaluation. If question comes like this, you can answer the, this is also part of placement evaluation. Up to this, all of you understood what is placement evaluation now? Hello? प्लेसमेंट एवेल्यूएशन के बारे में आइडिया आ गया. बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग न्यू टॉपिक, we evaluate the previous knowledge or experience of the learner, that is the placement evaluation. समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो, Yes, sir. then next one is formative evaluation. So what is formative evaluation? For the first time in the year 1967, Michael used the concept of formative evaluation while working on curriculum evaluation. Curriculum evaluation का बारे में working करने के time, this person has given the formative evaluation. Just we want to extract the concept from these things. We are not educationalist. हमको क्या चाहिए concept समझने के लिए, we are using these materials. So these things whether remember or not, नाम याद रखना है, issue लिखना है, it is not that much important. हमको concept समझना है. Formative क्या है? Formative evaluation is typically conducted during the development or a improvement of a program or a product or a person and so on, and it is conducted often more than once or in house staff of the program with the extent to improve. ये broader definition है. ये एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, ब्रॉडर सेंस में ये फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन बताए. इसमें हमको की पॉइंट्स क्या लेना है? इट विल बी डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम. while formative evaluation is typically conducted during the program or during the course, then it can be conducted often more than once. Formative evaluation हम एक ही बार नहीं करते, बार बार भी more than once भी कर सकते. It is for in the house staff program in the extent to improve. कितना ये अलग सेंस में बताया अकॉर्डिंग टू एक प्रोग्राम और स्टाफ को इंप्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन. बट इन द एजुकेशन वी डूइंग द फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, बच्चों का लर्निंग, टीचिंग लर्निंग क्या हो रहा है, टू इंप्रूव द आवर टीचिंग लर्निंग मेथड्स, वी विल डू द फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन. If you analyze the definition, it is clear that purpose of conducting formative evaluation is to monitor the learning progress of the learner. Formative evaluation हम क्यों करते हैं? Progress क्या है learner को, whether the students learners understanding or not. That's why formative evaluation will be done. Though initially the concept of formative evaluation is coined in the area of curriculum development, but subsequently the term got familiar to use the टीचिंग पेडागॉजी. यूजुअली दिस फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करिकुलम डेवलप का कॉन्सेप्ट में किया है वो लोग, बट इट इज लेटर ऑन एडेड इन द टीचिंग पेडागॉजी आल्सो. द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में वो इसको फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को वो लोग यूज करने लगे. इट इज आल्सो कंडक्टेड टू नो वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट. The key word in formative evaluation is learning progress. Learning progress ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये देखने के लिए हमने फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन करते हैं. फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन इज कंसिडर्ड एज द सेकंड स्टेज ऑफ द एवेल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. प्लेसमेंट एवेल्यूएशन कब करते हैं? एंट्री ऑफ द कोर्स. बीएमएस का फर्स्ट ईयर का बच्चों को पहले शुरुआत क्लासेस में हमने प्लेसमेंट एवेल्यूएशन किया. आफ्टर 1 month or 2 months or later on we will do the फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन. वेदर बच्चे समझ में आ रहे नहीं आ रहे, दोष मतलब क्या है, पंचमहाभूत क्या है, धातु क्या है, ये समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ऐसे हमने टेस्ट करते हैं उनको, एवेल्यूएशन करते. दैट इज द फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन टू नो द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग प्रोग्रेस हो रहे नहीं हो रहे वो समझने के लिए. द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवेल्यूएशन इज प्लेसमेंट एवेल्यूएशन. फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन स्टार्ट फ्रॉम द very beginning of the designing instruction and it continues till the end of the course instruction.
बच्चे एडमिशन के फर्स्ट मंथ से ही शुरू होता है एंड अप टू द फाइनल एग्जामिनेशन वी विल डू द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. बिगिनिंग ऑफ द कोर्स मतलब नॉट द स्टार्टिंग, बिगिनिंग, शुरुआत से ही. अगर फर्स्ट बीएमएस का फर्स्ट क्लास होते 1 महीने होने के बाद हम थोड़ा एवेल्युएशन चालू करते हैं बच्चों को समझ में. वाई? बिकॉज लर्निंग प्रोसेस अगर शुरुआत में ही बच्चों को समझ में आ रहे, we can change the teaching methods or we can take the extra classes, we can teach the better way. Ultimate aim is to learner to learn whatever things we told, or the learning objective should be achieved. So beginning of the course शुरुआत से एंड एग्जाम आने तक फॉर्मेटिव क्या हम एवेल्युएट करते हैं, वेदर इट इज एग्जाम. अलग अलग टूल यूज करते हैं, नॉट ओनली टेस्ट, नॉट ओनली दी we can ask, we can give the some assignments, we can give the activities, whatever thing you use for the evaluating whether learning objectives is happening or not, achieving or not, that is the formative evaluation. Conducting unit end examination, monthly examination, quarterly examination, half yearly examination, etc. are example of the formative evaluation. It provides the feedback to the teachers to know the effectiveness of their teaching. अगर एक टेस्ट एक चैप्टर होने के बाद आप टेस्ट लिया, देन इट गिव्स द टीचर को फीडबैक मिलता है. ये चैप्टर में इतना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया, कितना लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है. बेस्ड ऑन दैट मॉडिफिकेशन रिक्वायर्स एंड लर्नर्स टू नो द प्रोग्रेस ऑफ देयर लर्निंग. लर्नर्स को भी समझ में आता है, टीचर को भी समझ में आता है बच्चे को किधर समझ में नहीं आ रहे, व्हाई दे आर फेलिंग टू आंसर दिस करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ये समझ में आता है. इट आल्सो प्रोवाइड्स स्कोप फॉर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के लिए स्कोप है, मतलब क्या है, अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे दिस फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में ठीक नहीं कर रहे, देन वी विल गो फॉर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. क्यों नहीं हो रहा है, it will give the scope for the diagnostic evaluation. The silent features of formative evaluation are as follows. It builds on the prior knowledge, because formative evaluation होने से पहले हमने क्या किया है, प्लेसमेंट एवेल्युएशन किया है. उसका आधार पर ही हम इनिशियली टीचिंग करते हैं, बाद में हमने फॉर्मेटिव एवेल्युएशन शुरू करते हैं. सो इट बिल्ड्स ऑन द prior knowledge and experiences of the learners and ensures learner friendly assessment. learner friendly assessment रहते हैं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं रहते. हमने एग्जाम के बाद वो कभी कभी ओपन बुक टेस्ट भी देते, कभी कभी अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं. जस्ट एंश्योर वेदर learning process is happening, learners are understanding or not, that is the concept. It helps in the enhancing the learning abilities of the learner का abilities enhance करने के लिए help होता है. It provides scope for the use of varieties of activities, various tools, techniques for promoting holistic development of the learners. अलग अलग तरीके से एक्टिविटी, टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं बाय डूइंग द रेगुलर फॉर्मेटिव evaluation. It ensures learning in a non-threatening and supportive environment. Formative assessment में हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं रहते हम उतना. अगर एक मंथ के बाद हमने टेस्ट किया तो बच्चों को एक फ्रेंडली बताते हैं, आपको इधर समझ में नहीं आ रही है, ठीक से पढ़ना है, क्लास में ध्यान से सुनना है, अगर इधर ही ऐसा कर रहे फाइनल एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाता है. ऐसे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलते हैं लर्नर्स को. नॉन थ्रेटनिंग मतलब हम डराते नहीं है अगर तुरंत फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में. देखो आप सब लोगों को मैं क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया तो आप लोग ठीक से नहीं लिख पा रहे, सो आपको ध्यान नहीं रहते, कॉन्सेंट्रेट करो, फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट. ऐसे एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंश्योर करते लर्नर के लिए. इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्टिव फीडबैक टू चिल्ड्रन फॉर रियलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. बच्चों को भी समझ में आते मुझे किधर आंसर कर रहे, नहीं आंसर नहीं कर पा रहे फॉर पर्टिकुलर दैट कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट. It provides a chance to learners to reflect on their performance as realizes the role of motivation, self-esteem of the students learning. Again, same thing. It encourages learners to understand and that have been used to judge their performance. उनका performance उनको पता चलता है. It helps learners to actively and continuously engage in the learning. सो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करते गए तो बच्चों को क्या है, एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली एंगेज. सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर टेस्ट लेते, कोई भी असाइनमेंट दे सकते, सो आई हैव टू लिसन, आई हैव टू फोकस.
that will help the learners to actively and continuously engage in the learning. अगर हमने कुछ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन बीच बीच में टेस्ट नहीं लिया, कुछ असाइनमेंट नहीं दिया, कुछ टास्क नहीं दे रहे, तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, डायरेक्ट फाइनल एग्जाम आने दो तब पढ़ाई करेंगे, वैसा उसमें. बट फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या होता है, इट हेल्प लर्नर्स टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली एंगेज इन दी लर्नर्स. नहीं हमको टर्म टेस्ट आते बीच बीच में, 15 दिन में सरप्राइज टेस्ट लेते सर. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, देन it will help for the actively and continuously engage in the learning. Next, it provides feedback to the teachers, use teaching strategy. ये आपको पता चल गया ये क्या है मीनिंग. Then it is diagnostic, remedial, formal, informal approach of the assessment. क्या है, it is diagnostic भी होता है, क्योंकि based on the this formative evaluation only we will move on the diagnostic. It may be in the nature of diagnostic or remedial. Remedial अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहे, then we give the some एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा बोलते बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं. इट इज बोथ डायग्नोस्टिक, समस्या क्या है लर्निंग में वो भी पता चलते हैं इससे, एंड वी कैन आल्सो डू दी उसको मेजर्स, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं. सो इट इज इन द नेचर ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल बोथ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मतलब ए मार्क्स हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, दैट में भी इनफॉर्मल, कोई एग्जाम बोर्ड को एग्जाम को लेना देना नहीं रहते, हम हमारे लिए एक टेस्ट लिया रहते. सो इट में भी फॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है, अगर क्या बोलते हैं हमने टर्मिनल टेस्ट लेना है एवरी 6 months, दैट इज फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आल्सो, दैट इज फॉर्मल आल्सो, दैट इज गिवन बाय इन द करिकुलम आल्सो. इनफॉर्मल क्या होता है, हमने 10 दिन के बाद अगर कोई टॉपिक के बाद तुरंत कुछ टेस्ट क्वेश्चन दिया, दैट इज इनफॉर्मल. सो फॉर्मल इनफॉर्मल अप्रोचेस ऑफ द असेसमेंट, ये सारे चीजें फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आ सकते हैं. सो इट इज ओवरऑल मेन इंटेंशन इज टू ensure the learning process or whether we are achieving learning objectives or not. Formative evaluation supports for continuous and comprehensive evaluation of the learners. It provides the both teachers and learners establish the continuous assessment culture in the classroom. The components of formative evaluation culture in the classroom, क्या है इसमें. formative evaluation क्या है, वन बाय वन इसमें क्या है, इसमें देखो फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में हम क्या करते हैं, यूज ऑफ मल्टीपल मेथड्स टू असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, यूज ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शनल अप्रोचेस टू एड्रेस द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गोल्स एंड ट्रैकिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस. इसमें हमको इंडिविजुअल प्रोग्रेस पता चलता है, कौन सा बच्चे है, ये लड़का ये लड़की ये लैक है कॉन्सेप्ट में. फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में हमको इंडिविजुअल ट्रैकिंग पता चलता है. देन बच्चों को एक्टिव एंगेजमेंट इन द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस के लिए हेल्प करता है. फीडबैक एंड एडजस्टमेंट इन टीचिंग, फीडबैक मिलता है हमको तुरंत, सो एंड वी कैन एडजस्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज पर द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. अगर बच्चे बोलता है, अगर फीडबैक मिला हमको, क्यों सब लोगों को करेक्ट आंसर नहीं दिया, सर आपका टीचिंग फास्ट है और आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हमको फीडबैक मिले तो वी कैन एडजस्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस. सो ये सारे चीजें, these are the components of this formative evaluation. Formative evaluation में हम क्या करते हैं, एक पिक्चर हमको रिप्रेजेंट करता है. use variety of tools and techniques for conducting the formative evaluation. Different techniques and tools को हम यूज करते हैं इन formative evaluation में. This is one of the example. CBSE में केंद्रीय विद्यालय वाले क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने के लिए सजेस्ट करते हैं. सो टूल्स क्या क्या है, क्वेश्चनरी, यू कैन यूज दिस टूल्स एंड टेक्निक्स इन द फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन. टूल्स में क्या क्या आते हैं, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरवेंशन शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, incidental record, document analysis, test and invent, portfolio analysis. We will see what is the portfolio analysis. Examination, assignments, quizzes, projects, debates, allocation, group discussion, action plan, experiments, worksheet, seminar, symposium, survey. ये सारे टर्म्स है ना, ये हमारा सिलेबस में भी लिखा है. एग्जामिनेशन कर लो, असाइनमेंट दे दो, क्विज करो, प्रोजेक्ट करो, डिबेट करो, एलोकेशन दे दो, ग्रुप डिस्कशन करो, ये सारे करिकुलम में लिखा है. ये सारे टर्म्स हमारा करिकुलम में आपको मिलने के लिए मिलता है. सो
यू हैव टू रिमेम्बर जस्ट इधर हमको क्या इंपॉर्टेंस है, टूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चनरी को हम टूल बोलते, एग्जामिनेशन को हम टेक्निक्स बोलते, इतना अभी इसमें ध्यान रखना है। व्हाट इज ए चेकलिस्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट, डिबेट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमारा करिकुलम में 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया है एनसीएसएम का मैनुअल में। सो आप उधर जाए तो उसका मीनिंग मिलता है, असाइनमेंट का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, क्विज एंड कंपटीशन, ये और सम मोर टर्म्स आर, सम मोर टूल्स एंड टेक्निक्स आर एडेड इन दी आवर करिकुलम, हमारा मैनुअल में इसके साथ और थोड़ा मिलेगा, बिकॉज वी आर इन दी हायर एजुकेशन। दीज टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दिया है और केंद्रीय विद्यालय के लिए ये दिया है। सो दीज टूल्स वी आल्सो यूजिंग प्लस सम एडिशनल टूल्स आल्सो देयर। इसके साथ सम एडिशनल टूल्स एंड टेक्निक्स आर आल्सो एक्सप्लेन्ड इन अवर मैनुअल। वो सारे चीज हम अगर टाइम मिला तो मैनुअल ओपन करके उधर डिस्कशन करेंगे, और यू कैन सेल्फ रीड, अगर आपको ओपन करके पढ़ाई किया तो भी समझ में आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप यू कैन आस्क। And it is essential for teachers to realize that they do not need always to use the formal unit test, formal performance test. Instead, they should integrate formative assessment in their day-to-day classroom practice in various ways. Formative test का मतलब, formative evaluation का मतलब always test लेना नहीं है. Observation during the classroom activities. Non-verbal facial expression of the children. बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ये करते हैं, उनका एक्सप्रेशन, क्लासरूम डिस्कशन में कैसे इन्वॉल्व होता है, होमवर्क करते या नहीं करते, informal question answer sessions, classroom activities, whether children make presentations such as presentation reports, अगर कुछ आप वर्क दिया तो स्टूडेंट्स करके आ रहे नहीं आ रहे, क्लासरूम में उनका डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है नहीं होता है, क्लासरूम में सुनता है। सो दीज ऑल टेक्निक्स और टूल्स वी कैन यूज इन दी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। नॉट ओनली अगर टेस्ट लेते हैं ना, वो फॉर्मल टेस्ट लेना, वो that only not consider as a formal evaluation, unit test लेना ही formal evaluation नहीं है। This also thing we can integrate in the formative assessment. So student feedback, self evaluation of children in different activities, maintenance of reflective journals by teachers received by them periodically, अगर बच्चे journals लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, यूनिट बाय यूनिट एज पीरियडिकली लॉग बुक मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, ये सारे चीजें हम इंटीग्रेट करके फॉर्मेटिव evaluation करते हैं। The above aspect of assessment of learners performance can be done by the teachers in daily teaching or periodically as per as situation and scope। situation and scope के अनुसार हम ये सारे चीज को अप्लाई करना पड़ता है। The use of any particular tool technique depends on the nature of the topic being discussed, nature of activities undertaken. Now in our manual also they have given the what tools and technique should be used for that particular point, वो लिखा है हमारा मैनुअल में। एंड लास्ट में एक सेंटेंस भी है, based on the time, based on the topic, based on the need, you can use the appropriate tools and techniques according to need of the teacher। टीचर के ऊपर डिपेंड है, टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, which tool techniques we can use, which method we can use। So we may often need more than one assessment tool technique have to comprehensive formative। अगर comprehensive होना है, you may need the मोर देन वन असेसमेंट। सिंपली टेस्ट ले रहे उसके ऊपर हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे तो दैट डज नॉट मीन्स कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स मोर देन वन और मोर देन वन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे तो दैट इज कॉम्प्रहेंसिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स ओवरऑल असेसमेंट। As example, we practice presentation of a project as a technique of assessment in the class. We can equally use the portfolio as a technique for assessment periodically। portfolio का meaning क्या है मैं बताता हूँ आपको बाद में। That concept comes under the later on also। The learners will make their portfolio periodically, where presentation of the project which has already presented by the learners can also be preserved and included in the portfolio of a pedagogy evaluation। portfolio का मतलब क्या है, whatever activities the student will done that will be stored or maintained। अगर बच्चे कुछ प्रेजेंटेशन कर रहे, कुछ काम कर रहे हैं, आज कुछ किया,
कल कुछ किया, ऐसे एक डॉक्यूमेंट रहता है. अगर आज कुछ प्रोजेक्ट कर रहे, प्रेजेंटेशन कर रहे, सो इफ यू सी दी हिज पोर्टफोलियो, वी विल सी दी ऑलरेडी दिस वर्क हैज डन, ये वर्क किया है, आज करने का जरूरत नहीं, ये पता चलता है हमको. दैट्स व्हाई दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो. पीरियडिकली वी शुड नो. ऑलरेडी डायबिटीज का बारे में एक स्मॉल प्रोजेक्ट किया रहते वो लोग, फिर से कुछ प्रोजेक्ट करके आओ बोले तो फिर से वही प्रोजेक्ट करके आते हो. इफ यू मेंटेन द पोर्टफोलियो, इफ यू चेक द पोर्टफोलियो, यू विल कम टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट टर्म में हो गया. सो ये पता चलता है. दैट इज द पोर्टफोलियो मीन्स इन ब्रॉडर सेंस. Then what is diagnostic evaluation? As we know, diagnostic evaluation is conducted along with formative evaluation during the instructional process. Formative evaluation के टाइम कुछ प्रॉब्लम लग रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ठीक से नहीं हो रहे हैं, then we will do the diagnostic evaluation along with the formative evaluation. Or formative evaluation give the scope for the diagnostic evaluation. Both are give the same meaning. It carried based on the data obtained from formative evaluation में हमको data मिलता है. This type of students are not understanding, वो पता चलते हैं based on that formative evaluation में, based on data obtained from the formative evaluation से diagnostic evaluation conduct करते हैं. Especially to identify, remove the difficulties of learner, it is observed. Then if learner could not understood certain concept in a particular subject, continuously performing poorly in that subject, we conduct diagnostic test to know the cause of difficulties. Accordingly, provide them remedial treatment, remedial class हो, remedial extra class हो, overcome the difficulties के लिए हमने remedial treatment. Remedial treatment is a general term. We can take the remedial class, extra class, whatever thing to overcome that difficulties. Then in the diagnostic evaluation, identifying of teaching learning difficulties, diagnostic evaluation not only solve the learning difficulties of learners, but also identifies and provides the remedies for personal, physical and psychological problems. क्यों बच्चे पीछे पड़ रहे, हमको पता चला उनका फिजिकल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, पर्सनल एस्पेक्ट, कोई पर्सनल रीजन के वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कुछ घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये भी हमको डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में पता चलते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू दी प्रोवाइड द रेमेडीज फॉर दैट डिफिकल्टीज. This can be exemplary as sometime you may find the few students in your class are very nervous to come forward and say something. Tendency of fear towards the friends and teachers, suffering certain psychosocial disorders and physical disorders. ये सारे चीजें हमको डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में पता चलता है. Whether I am very fast, whether you are able to understanding or not. आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? Because I am repeating, you are also seeing the content also. I am going little bit fast. Whether you are able to understanding or not. समझ में आ रहा है आपको? Hello? Hello? Please reply. All of you are listening. Hello, Satish sir. Dr. Anusha. Yes, sir. Are you able to follow? क्या बता रहे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then summative evaluation. So final summative evaluation क्या है? Summative evaluation is used to find out extent to which the instructional objectives have been achieved at the end of terminal period. फर्स्ट ईयर एक कोर्स का एंड ऑफ द पीरियड में हमने टोटल एवेल्युएशन करते, दैट इज कॉल्ड एज summative evaluation. It is used primarily for assigning course grades or certifying students mastery of the intended learning outcomes at the end of particular program. अगर फर्स्ट BMS का कोर्स खत्म होने के बाद we will certify the students he have the mastery over the that subjects covered under the first BMS course. पदार्थ विज्ञान में इतना मार्क्स लिया है, ये ग्रेड लिया है, anatomy में इतना मार्क्स लिए, ये ग्रेड लिया है. It is basically for certifying and it is the conducted at the end of the that course.
That is the summative evaluation. The techniques used for summative evaluation are determined by the instructional objectives. For this evaluation, both external and teacher-made tests are used. Although the main purpose of summative evaluation is assigning grades or marks, it also provides information for judging appropriateness of the course objectives and the effectiveness of the instruction. Actually हमने यूनिवर्सिटी एग्जाम इसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, स्टूडेंट्स को मार्क और ग्रेड देने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए. It also helps for judging the whether first BMS से इनका अगर बच्चे फेल हो गए, कम मार्क्स आ गए, स्कोर ओवरऑल स्कोर कम आए, तो इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिविटी, फर्स्ट ईयर का टीचर्स, क्लासरूम का इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का बारे में भी हमको पता चलता है, वेदर इज learning has done good or not. That is also we will understood by the summative evaluation. But summative evaluation का major focus किधर रहता है, certifying the learner और whole as a whole that course का mastery कितना है वो पता चलता है. You will give the marks or grade. So it examination कभी कभी external evaluation करता है, कभी कभी some institution some courses में teacher the own teacher can be done. अगर स्कूल लेवल में, सेकेंडरी हाई स्कूल लेवल में 8th का 9th का, it is done by the teacher only who teaches the physics. They only evaluate the same teacher evaluates the question paper. But in as comes in board exam 10th second year ये सारे में क्या होते हैं, हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर एक्सटर्नल लोगों के पास जाते हैं. सो दैट इज द मीनिंग. ऑल्दो द मेन पर्पस ऑफ समेटिव एवैल्यूएशन for this the both external and teacher made test are used. ये दोनों यूज कर सकते हैं depending on the context. Then so far we have discussed 4 types of evaluation. Though all types of evaluation are conducted in teaching learning process, but the use of formative and summative evaluation are popular among them. You have to remember this. The formative and summative evaluation are popular. In our curriculum also we are using the formative and summative evaluation. You might have observed the similarities and difference among them. Certain difference and similarities are there. The similarities among them is that all are concerned with the assessment of learning. सबका intention क्या है, whether it is a placement, formative, diagnostic, assess the learning हो रहे नहीं हो रहे. That is the similarity. All are conducted at the different phases of the teaching learning process, but they differ in terms of their purpose, process, technique and tools used in collecting the evidence, process of providing feedback, functions, period, teaching learning process and their uses for future purpose. So इसके ऊपर उनका बीच में थोड़ा difference based on these things. So we can summarize the summative evaluation as follows. It is conducted after the completion of the instruction in a term, a course or a school session. Completion होने के बाद हो सकते हैं summative. It sums up how much a student has learned over a period of time. First year BMS का या last university exam में it sums up how much student learn over this year. It focuses mostly on the assessing and scholastic ability of the children. Scholastic ability मतलब ये इसका exact meaning meaning ऐसे directly बोल नहीं सकते, लेकिन scholastic and another word will come probably in next slide. With that, comparing that word only, we will understand the perfect meaning of this scholastic. Now just you remember scholastic मतलब स्कूल में कितना रेगुलर है, स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, that indicates the scholastic in general way. Scholastic abilities of the children. It contributes to the overall grading and certification of the children. It is mostly structured and formal approach to assess of learning. स्ट्रक्चर्ड रहता है, कितना मार्क्स को लेना है, कैसे लेना है, कितना 5 मार्क्स का आना है, 10 मार्क का आना है. एंड फॉर्मल अप्रोच है. फॉर्मल क्यों है, ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है, अथॉरिटी कंडक्ट करता है. ये मार्क्स इसमें एवेल्युएटर एग्जामिनर आते हैं, क्वेश्चन पेपर का प्रिपेयर होते हैं, कलेक्ट करते हैं, मार्क्स को सर्टिफाई करना रहता है. दैट इज इट इज ए फॉर्मल अप्रोच टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग. बट वाइल फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में क्या था, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. समझ में आ गया आपको डिफरेंस क्या है. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में था ना एक वर्ड, इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. बट समेटिव में क्या है, इट इज फॉर्मल अप्रोच ओनली. दैट इज द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट इज ए टर्म एंड में कोर्स एंड में लेते हैं हम.
It provides the terminal feedback both to the teacher, children to redesign their teaching and learning accordingly. So these are the next on. So we can see the later we can move the formative and summative. Up to this, all of you understood what is the placement, diagnostic evaluation and formative and summative evaluation. आइडिया आ गया आपको कुछ? हेलो Yes, हेलो sir. ओके. So now we will see the distinction or difference between formative and summative evaluation. Time of use. During the process of instruction में formative evaluation करते हैं. At the end of term or semester or session के end में हम summative evaluation करते हैं. Purpose क्या है? To know the progress and mastery of learning, to provide feedback both teachers and learners, to provide data for summative evaluation. Summative evaluation के लिए डेटा प्रोवाइड करता है. मतलब हमने टर्मिनल टेस्ट का मार्क्स देते हैं ना फाइनल समेटिव एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट देने के लिए. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टू प्रोवाइड द डेटा फॉर समेटिव एवेल्युएशन. हियर क्या है? इट्स टू सर्टिफाई ग्रेड ऑफ लर्नर्स, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स फॉर द फर्दर स्टडी. इट इंक्लूड्स द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. इंक्लूड्स मींस फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का डेटा ये यूज करता है. इट इंक्लूड्स द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. दैट इज द मीनिंग. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का भी मार्क्स हम कंसीडर करते हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इट इंक्लूड्स द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड विद द टॉपिक टॉट. कौन सा टॉपिक मैंने टीच किया है उसके ऊपर ही हम फॉर्मेटिव टेस्ट और कुछ करते हैं. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन फोकस ऑन रिलेटेड विद द टॉपिक टॉट आर लिमिटेड इन स्कोप. बट फाइनल एग्जाम में क्या होता है? यूनिवर्सिटी एग्जाम में समेटिव एवेल्युएशन में आर द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स. फाइनल स्वस्तरोत्तर एग्जाम लिख रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वस्तरोत्तर सब्जेक्ट पूरा इधर कवर हो जाता है. अगर मैंने सिर्फ सिंपली दिनचर्या टीच करके दिनचर्या के ऊपर टेस्ट लिया हुआ, दैट इज फॉर्मेटिव रिलेटेड विद द टॉपिक टॉट. बट फाइनल ईयर स्वस्तरोत्तर एग्जाम में क्या होता है? फाइनल एग्जाम में द रिलेटेड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स एंड द प्रोग्राम और वास्ट इन नेचर. पूरा स्वस्तरोत्तर सब्जेक्ट उसमें कवर होता है. Then process by classroom observation can be conducted through oral or written teacher made test, conducted peer or group assessment, mostly internal in nature, support the criterion, referred evaluation. Formative evaluation is usually quick evaluation. एक criterion referenced evaluation, ये भी एक कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ने वाला है. जस्ट लिसन, इट सपोर्ट द क्राइटेरियन रेफरेंस evaluation. Just this point comes under the next slides only. Just remember, it supports the criterion referenced evaluation. Formative evaluation is usually quick evaluation. हम खुद टेस्ट लेते हैं, कुछ evaluation करते हैं, तो that is the quick evaluation. But process इसमें summative में क्या आता है? By conducting term and examination most external in nature. Mostly it is external. हमारा एग्जाम को पेपर भी बाहर से आते हैं, वैल्यूएशन के लिए भी एक्सटर्नली जाता है. बाय कंडक्टिंग मोस्टली रिटर्न टाइप ऑफ एग्जांपल. ज्यादातर समेटिव एग्जामिनेशन में क्या रहता है? फाइनल एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन रहता है. बाय यूजिंग टीचर मेड एज वेल एज स्टैंडर्ड्स टेस्ट, इट सपोर्ट्स नॉर्म रिफ्लेक्टेड evaluation. Just remember these two words, criterion referenced evaluation and norm referenced evaluation. What are these things? We will discuss in the later on. Just after the completion of these differences, we will learn about criterion referenced evaluation, norm referenced evaluation. Summative evaluation helps the norm referred evaluation. Formative evaluation helps for the this criterion referenced evaluation. Just you have to remember, output of formative evaluation can be used in the summative evaluation. What is the output? Terminals, ये term test में क्या क्या marks आए, internal assessment का marks we will add on the final exam में. So that's why output of formative evaluation can be used in the summative evaluation. Tools and techniques. By using variety of assessment tools, techniques like text, questionnaire, scale, schedule, checklist, portfolio, quiz, ये सारे चीजें यूज करते हैं. But summative exam, final exam can only be conducted with written test, paper and pencil test. That is the method of conducting the summative test. Final exam में हम
क्वेश्चनरी पूछना, क्विज करना, वो नहीं करते. इट विल बी रिटर्न एग्जाम. फाइनल एग्जाम शुड बी रिटर्न टेस्ट. So that is the summative exam. Product enable learners to know their progress in learning, difficulties they face, they remove those difficulties, enable the learners for their continuous comprehensive development, provide suitable remediation for the further development. ये सारे चीजें करते हैं फॉर्मेटिव में. बट समेटिव में एक बार फाइनल एग्जाम लिख दिया तो ये सारी चीजें नहीं कर सकते. इट इज फॉर अवॉर्डिंग द सर्टिफाई द लर्नर्स, मेक देम एनेबल एंड एलिजिबल टू परस्यू फर्दर एजुकेशन. अगर फर्स्ट BAMS में पास हुआ, then it helps for the entering into the second BAMS. Otherwise, he will not eligible for doing the second BAMS. Certain criteria किया ना वो लोग, फाइनल एग्जाम में इतना सब्जेक्ट पास होना है. That is the concept of summative evaluation. So up to this, all of you understood. So what is the these types of classification evaluation based on the phases of the formative evaluation on the basis of instruction के ऊपर. placement evaluation we learn, formative evaluation we learn, diagnostic evaluation we learn, and summative evaluation we learn. And we also learn the difference between formative and summative, because formative and summative we use in the most of the time we use the formative and summative evaluation in our curriculum. These are important. So next classification is evaluation on the basis of nature of the reference. कौन नेचर ऑफ द रेफरेंस के अनुसार हम एवेल्यूएशन को भी एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. हियर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरियन reference testing can be termed as the two alternative approaches to educational testing. Though there are some similarities between these two approaches to testing, there are also fundamental difference between the two. These both of these are termed as a complementary approaches. So nature of reference के हिसाब से हमने दो के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं evaluation को. What is that? First one is criterion reference evaluation. Just now we learned that formative evaluation help for the criterion referenced evaluation. So what is criterion referenced evaluation? A glosser first use the term criterion reference test to describe the learner's achievement on a performance continuum. I will tell what is this. A good example is measuring your body temperature. Accepted normal level 98.6 degree Fahrenheit. If your temperature is too high comparison, you are running fever. This example they have done. What is the criterion reference evaluation means? So they will assess, they will make the evaluation based on certain references, criteria based on the criteria. For example, क्या है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल क्या है? 19.6 डिग्री फ़ारेनहीट है. अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो we will call as it as a fever. So ये क्रिटेरिया है. बॉडी नॉर्मल इतना होता है, ये नॉर्मल है. So this criteria, above this criteria we will call the fever. अगर कुछ हमने एवेल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों का, लर्नर्स का, विथ सर्टेन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एज ए रेफरेंस, देन इट इज कॉल्ड एज ए क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूएशन. फॉर एग्जांपल इन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में क्या किया, मैंने स्वस्थ रोगता का दिनचर्या टॉपिक पढ़ाई किया, एक टेस्ट लिया है 20 मार्क्स के लिए, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया. आई एम एवेल्युएटिंग विथ द क्राइटेरिया ऑफ 20 मार्क्स. 20 मार्क्स में कितना लेता है उतना ही कंपेयर करता है. अगर बच्चे 10 मार्क्स लिया, 15 मार्क्स लिया, 5 मार्क्स लिया, 2 मार्क लिया, 1 मार्क्स लिया, वो आई विल रेफरेंसिंग, आई एम एवेल्युएटिंग दैट क्राइटेरिया 20 मार्क्स में कितना ले रहे बच्चे और 100 मार्क्स में कितना ले रहे. सो सर्टन क्राइटेरिया, सर्टन स्टैंडर्ड रेफरेंस वी विल कीप एंड वी विल assess or evaluate the things. That is the criterion referenced evaluation. इसमें क्या करते हैं, मैं अगर स्वस्थ रोगता का दिनचर्या का टॉपिक में मैंने 20 क्वेश्चंस पूछा है, सो अगर बच्चे ने
15 मार्क्स लिया, सो इट इज गुड। अगर एटलीस्ट 20 मार्क्स में 15 तो लिया है, सो इतना तो समझ में आ गया बच्चों को, ये मुझे एक आइडिया मिलता है। सो आई विल सीइंग दी 20 मार्क्स को मैंने स्टैंडर्ड और एक क्राइटेरिया रखा है। आई विल नॉट सी दी दिस रमेश स्कोर्ड 15, महेश स्कोर्ड 10, मुझे वो नहीं चाहिए उधर। मुझे 20 मार्क्स के लिए रमेश कितना लिया है, महेश कितना लिया। अगर रमेश 15 मार्क्स लिया, हाँ इट इज गुड 20 मार्क्स के लिए। अगर महेश 10 मार्क्स लिया, मैंने उसका एवेल्यूएशन किसके ऊपर करते हैं, 20 मार्क्स के लिए। महेश आप 10 ही मार्क लिया है, सो 20 मार्क्स एटलीस्ट 15 लेना है। सो आई विल असेस आर एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन दी दैट 20 मार्क्स, नॉट रमेश महेश को दोनों को कंपेयर नहीं करते। महेश देखो रमेश आपसे 5 मार्क्स दिए, दैट इज नॉट माई इंटरेस्ट। सो एवरीवन शुड टेक दी 15 or more than 15 marks. That is my interest in format criterion referenced evaluation. Not we are comparing both to individuals. It is usually happens in the formative evaluation में होता है। हमने यूनिट टेस्ट लेते, एग्जाम लेते, उसमें बोलते बच्चों को मार्क्स का बारे में, कौन ज्यादा लेते, कम होते, ज्यादा होते, उसका बारे में टेंशन मत लो, आपको कितना समझ में आ गया वो चेक करने के लिए हमने ये टेस्ट ले रहे हैं, बताते हैं ना बच्चों को। दैट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन। Criterion reference test is used to find an individual status with respect to defined achievement domain. The purpose of criterion referenced evaluation or test is to assess the objectives, and that's why it is termed as a objective based test. तो criterion referenced evaluation को हमने objective based test भी कह सकते हैं। objective मतलब what are the objective? For example, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल अनाटॉमी का बोन का बोन अपर एक्सट्रीमिटी का बोन को टीच किया। आफ्टर द टीचिंग मैंने अपर एक्सट्रीमिटीज का बोन टीच करने के बाद मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा। अगर हर एक बच्चा हर एक बोन को आइडेंटिफाई करके दिस इज क्लेविकल, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ला, ऐसे आइडेंटिफाई करने लगे तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट शुड आइडेंटिफाई दी बोन्स, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर बच्चे समझ गए नहीं समझ गए वो देखना है मुझे। क्राइटेरिया क्या है, ऑल दी बोन्स शुड बी आइडेंटिफाइड बाय एवरी स्टूडेंट, दैट इज दी माय ऑब्जेक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट। सो the purpose of criterion reference evaluation or test is to assess the objectives, that's why it is termed as objective based test. समझ में आ गया आपको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन क्या है। अगर 100 मार्क्स के लिए 80 मार्क्स लिए, so 100 marks is criteria or standard I am taking and I am assessing or evaluating the 80 मार्क्स ठीक है। 100 को कंपेयर 100 मार्क्स के लिए 80 ठीक है। अगर 40 मार्क्स लिया 100 को, सो व्हाट वी इन्फरेंस, सो 40 मार्क्स बहुत कम हो गया, एटलीस्ट 50 तो लेना था। ऐसे एक ये करते हैं ना, हियर द क्राइटेरिया इज द स्टैंडर्ड मार्क और समटाइम्स इट विल बी ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज द क्राइटेरिया। इधर हमने 40 मार्क्स लिया वाला और 80 मार्क्स लिया वाले के बीच में कंपेयर करके करने का इंटेंशन नहीं हमको। वी विल कंपेयर विथ 100 मार्क्स, दैट इज द क्राइटेरियन बेस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्यूएशन। समझ में आ गया आपको क्या है क्राइटेरियन बेस्ड रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन, ऑल ऑफ यू? यस सर। नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन, इधर क्या होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एन इंडिविजुअल स्टेटस विथ रेस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑन द टेस्ट। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने यूज करता है। फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड रैंक कौन है, थर्ड रैंक कौन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्म रेफरेंस एवेल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 98% लिया हुआ आदमी को, 98 percentile, not percentage, 98 percentile, 98 I have taken 98 percentile means what? इसका मतलब क्या होता है, 98 परसेंटाइल मतलब क्या है? इट इज नॉट परसेंटेज। परसेंटेज में क्या हो गया, समटाइम्स परसेंटेज, अगर कोई 50% लिया है,
कोई 90% लिया है, अगर हमने ये दोनों के बीच में कंपेयर करें, ये परसेंटेज के ऊपर नॉर्म रेफरेंस मींस द इंडिविजुअल स्टेटस विथ रेस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑन द टेस्ट। अगर हमने बच्चों का बीच में आप परसेंटेज के ऊपर, मार्क्स के ऊपर एक एवेल्यूएशन कर रहे हैं, देखो वो 90% लिया है, आप 50% लिया, ऐसे कंपेयर करके evaluation करने लगे तो that comes under the norm reference evaluation. It is usually done in the competitive exam. Why? Because कौन ज्यादा करते उनको ही हमको लेना रहते that particular job में, that particular कोर्स के लिए, सिलेक्शन के लिए. So it is usually comes into the competitive exam. जॉब के लिए अगर ये BMS के बाद एक का परसेंटेज 70% हो गया, एक का परसेंटेज 60% हो गया, जॉब के लिए गवर्नमेंट अप्लाई करने के बाद किसको प्रेफरेंस देगा वो? So 70% वाले को. So that is the norm referenced evaluation. The following statement. Amit stood third in the mathematics test. थर्ड बोल के बोल रहे हैं ना, थर्ड बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट एक आदमी है, सेकंड एक आदमी, थर्ड है, ये थर्ड पर्सन है मैथमेटिक्स टेस्ट में. वी आर comparing the his performance with other person, then only we are able to tell that he is a third one. सो इसके ज्यादा मार्क्स वाला सेकंड में है, उससे ज्यादा वाला फर्स्ट में है. दैट इज द कॉन्सेप्ट. द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगर हमने परसेंटाइल में बताया, उनका परसेंटेज 98 परसेंटाइल मतलब क्या है, 100 परसेंटाइल में इनका 98 परसेंटाइल मतलब 2% आर अबोव द हिम. 2% लोगों ने इनसे ज्यादा स्कोर किया है. 98 परसेंटेज मतलब क्या होता है? 98 परसेंटेज नहीं होता है, 98 परसेंटेज आ गए तो मतलब क्या है? 100 परसेंटेज में 98 परसेंटेज मेरा है तो only 2% of candidates are above than my marks, are above than my marks. वो समझ सकते. दैट इज द परसेंटाइल. आजकल क्या हो गया, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में परसेंटाइल ही यूज करते हैं वो लोग ज्यादा. 98 परसेंटाइल है, परसेंटाइल बेस्ड. इवन लॉट ऑफ हायर एग्जाम में परसेंटाइल यूज करते हैं. सो यूज्ड इन द कैट फॉर एडमिशन इन द IIMS एंड अलग डिफरेंट टॉप इंस्टीट्यूशन में ये करने के लिए ये करते हैं ना. ये सारे चीजें क्या है? नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. इधर एक इंडिविजुअल को अनदर इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करके हमने एवेल्युएशन करते हैं. दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. The norm reference test of an individual performance is compared with the similar information about the performance of the other. सेम लोगों का बीच में कर सकते. BMS स्टूडेंट पास आउट ग्रेजुएट के साथ ही BMS वाले को कंपेयर कर सकते. इंजीनियरिंग का इंजीनियरिंग सेम सब्जेक्ट वाले के साथ ही कंपेयर कर सकते. इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट का बीच में नहीं कर सकते. अगर इंजीनियरिंग का परसेंटेज देखे तो 90% 80% तक रहते हैं, वही मेडिकल का देखे तो 60% ही मैक्सिमम होते कभी कभी. और इधर 60% लिए, इधर 80% लिए, मतलब तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. सेम सिमिलर इंफॉर्मेशन और सिमिलर कोर्स और सिमिलर थिंग शुड बी देयर अबाउट द परफॉर्मेंस को. अगर हमने कंपेयर करने रहे तो सेम होना चाहिए. सेम कोर्स और सेम इसके ऊपर ही हम कंपेयर कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट कंपेयर्ड. मेडिकल स्टूडेंट और इंजीनियरिंग का परसेंटेज कंपेयर नहीं कर सकते. दैट इज द कॉन्सेप्ट नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. समझ में आ गया सबको? नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन समेटिव एवेल्युएशन में, समेटिव एवेल्युएशन में फाइनल एंड में करते हैं ना, वो बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. समेटिव एवेल्युएशन क्यों करते? बच्चों को हमने सर्टिफाई देते, ग्रेड देते टू फाइनल एग्जाम के बाद हमने हाँ ये 50% लिया, 60% लिया. इट विल द समेटिव एवेल्युएशन हेल्प फॉर द नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन. एक पॉइंट पढ़ाया किया था ना. Yes, this is formative evaluation. It supports the criterion referenced evaluation, but summative evaluation it supports the norm referenced evaluation. हमने परसेंटेज कंपेयर करने के लिए, नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन करने के लिए हमको ये समेटिव एग्जाम चाहिए ना, फाइनल एग्जाम्स का स्कोर चाहिए ना. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समेटिव एवेल्युएशन सपोर्ट्स द नॉर्म रेफरेंस्ड एवेल्युएशन. बट हियर फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में
इट सपोर्ट्स द क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एवेल्यूएशन। इधर एक बच्चों के साथ कितना कंपेयर है, हम कंपेयर का नहीं चलते, वो सब्जेक्ट टॉपिक हर एक समझ गया नहीं समझ गया, वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। दैट इज द समेटिव एंड फॉर्मेटिव एंड this is criterion based referenced evaluation and norm referenced evaluation. Then last, types of evaluation test of the basis of purpose. This is another classification based on the purpose. Diagnostic test, diagnostic check, all of you know that these tests help us identify the area of learning in which learner will need the remedial course. किधर प्रॉब्लम है, किधर रेमेडियल, किधर इंप्रूवमेंट चाहिए, ये डायग्नोस होने के लिए हमको टेस्ट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट. Test may be consist of battery of number of sub tests to cover the sub areas. So just understand diagnostic test क्या है और diagnostic evaluation also we learned. Diagnostic evaluation वही होता है ना, किधर प्रॉब्लम है, फॉर्मेटिव evaluation के बाद किधर प्रॉब्लम है हमको पता चलता है. सेम थिंग diagnostic test मत, it is identifying the area of learning where remedial or improvement किधर चाहिए वो पता चलता है diagnostic test. What is aptitude test? Aptitude test basically serve a predictive function. They help us identifying potential talents and desirable characteristics which are essential for one to be competent to perform specific tasks. These tests are generally used while selecting people for special courses. आपका एनटीईटी में आपको कौन सा टेस्ट बताया, कौन सा टेस्ट बोलता है एनटीईटी का टेस्ट को? एक वर्ड है. क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट. आपका क्या है टेस्ट? एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है. एप्टीट्यूड का मतलब होता है प्रेडिक्टिव फंक्शन. अगर एप्टीट्यूड टेस्ट इज ए प्रेडिक्टिव फंक्शन, whether you are able to do the job of teaching or not, they will predict based on your NTET test, because NTET is a aptitude based test. They help us identifying the potential talents and desirable characters which are essential for one to be competent to perform स्पेसिफिक टास्क. इधर क्या होता है, आप टीचर बोल के आपको दैट पर्टिकुलर टास्क करने के लिए वेदर यू आर डिजायरेबल, आपके पास टैलेंट है क्या नहीं, एसेंशियल कॉम्पिटेंसी है क्या नहीं, ये एनटीईटी एप्टीट्यूड टेस्ट को टेस्ट से आप उन लोगों को पता चलते हैं. देन ओनली इफ यू आर क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट, एनटीईटी टेस्ट, देन you will eligible to join as a assistant professor in the Ayurveda colleges. These tests are generally used while selecting people for special course or special things. Special course मतलब you are teacher होने के लिए आपको aptitude test देना पड़ता है. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्टिव फंक्शन करता है. आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल टैलेंट्स, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, आपको टीचर होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, टैलेंट्स चाहिए, एसेंशियल नॉलेज कॉम्पिटेंट है क्या नहीं, वो स्पेसिफिक टास्क टीचिंग का स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आपका एबल है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलता है? एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलते हैं. These are the aptitude test. Then achievement test. What is achievement test? As its name indicates, such test aim to measure the extent to which objectives of course have been achieved. The usual end course exam may be taken as a typical example of the achievement test. कि जनरली हमने फाइनल ईयर एग्जाम होने के बाद, फाइनल एग्जाम होने के बाद क्या अचीवमेंट करते हैं ना, आई हैव स्कोर्ड 80%, आई हैव स्कोर्ड डिस्टिंक्शन 90%, 70%. These are nothing but achievement test. मेरा अचीवमेंट कितना है? These are not aptitude one. सिर्फ मेरा कोर्स में कितना परसेंटेज लिया मैंने, to measure the extent to which objectives of the course have been achieved. अगर मैंने फर्स्ट बीएम से 80% किया, तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट में इतना ऑब्जेक्टिव्स, इतना पता है मुझे, 80% स्कोर किया. सो दैट रिफ्लेक्ट माय नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो इट विल नॉट माय स्किल, पर्टिकुलर टास्क को करने का कुछ भी मेजर नहीं करते, सिर्फ मेरा अचीवमेंट किया है मैंने बीएमएस में 60% लिया, 70% लिया, ऐसे अचीवमेंट पता चलते हैं. दीज आर अचीवमेंट टेस्ट. यूजुअल एंड कोर्स एग्जाम रहता है ना, फाइनल समेटिव का एग्जाम के बाद, दैट आर टेकन एज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट. दैट इज द अचीवमेंट टेस्ट. Then proficiency test. What is the proficiency test?
These tests aim to assess the general ability of a person at a given time. A scope is governed by a reasonable exception of what abilities learner of given status say matriculates of graduate should possess. A proficiency test का मतलब ये होता है that particular stage the certain capabilities certain things should be there in that person, that is the proficiency test. For example, अगर आपने एग्जांपल लेना है तो अगर अपने कांस्टेबल पुलिस और एनी मिलिट्री ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका एक प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, इतना टाइम में इतना किलोमीटर रन करना है, ये सारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहते हैं। अगर मैंने पहली बार टेस्ट को और दैट फिजिकल एग्जाम को अपियर हो रहा है, मैंने पहली अटेम्प्ट में क्या किया, मैंने बराबर रन किया, बराबर वट एवर थिंग्स हैव पास, बट मेरा थ्योरी में मैं फेल हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम भी फिर से मैंने एग्जाम के लिए भर्ती के लिए मैंने अप्लाई किया, देन प्रीवियस बार मैंने फिजिकल में हो गया था, उसके ऊपर ही मैं डायरेक्ट थ्योरी एग्जाम लिखता हूँ, वो नहीं चलते, फिर से एक बार आपका प्रोफिशिएंसी दिखाना पड़ता है, फिर से आप भागना पड़ता है, फिर से आपका फिजिकल फिटनेस आपको दिखाना पड़ता है। सो दैट टाइम यू हैव टू शो द proficiency, that is the meaning, simply understanding proficiency test. But these tests aim to assess the generally ability of a person at a given time, that given time में वो एबिलिटी होना चाहिए। मैंने पहली बार करके दिखाया था सर, नहीं, अभी आपको करना चाहिए, फिटनेस शुड बी देयर, दैट एबिलिटी शुड बी देयर एट ए गिवन टाइम, दैट इज द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। समझ में आ गया? The scope is governed by a reasonable exception of what abilities learners of a given status say matriculates of graduates should possess. ग्रेजुएट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए वो करना ही पड़ता है। मैंने वो टाइम पे किया था, अभी नहीं आते, वैसा नहीं है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज व्हाट आई एग्जांपल आई गिवन, बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट। समझ में आ गया सबको क्या है? What is diagnostic test, what is aptitude test, what is achievement test, and what is proficiency test? All of you? Hello? Yes, sir. Okay. So just in last moment, I have taken 2 questions. That's why these are like this. So just to understand the concept. Below are listed some activities performed by a teacher. Which activities are of the nature of formative evaluation? नीचे सम एक्टिविटीज दिया है, इसमें कौन सा ऑप्शन फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है? फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होता है। फर्स्ट वन, गिविंग ए, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, कंप्लीट नहीं हुआ है। Performed by teacher, which activities are the nature of the formative evaluation? Giving a mastery test, conducting a quiz session, and this is option C, evaluating student in a grading system, and option D is providing feedback while teaching.
providing feedback while teaching. Option E is encouraging student reflect more. ये क्या है इसमें? बिलो और लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर. टीचर ने सर ये बिलो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं. इसमें कौन कौन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में आता है? फर्स्ट क्या है? मास्टरी टेस्ट. गिविंग ए मास्टरी टेस्ट. क्या कर रहे हैं? मास्टरी टेस्ट ले रहे हैं. कंडक्टिंग क्विज सेशन, evaluating student in grading system, providing feedback while teaching, encouraging student reflecting more. ये 5 एक्टिविटीज में कौन सा एक्टिविटीज considered as formative evaluation? If you understand formative evaluation क्या है, so you will able to answer this. First one, giving a mastery test. Second one is conducting quiz session, evaluating student in grading system, providing feedback while teaching, encouraging student reflect more. फॉर्मेटिव एवेल्यूशन का मतलब क्या है? वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट का लर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है. गिविंग मास्टरी टेस्ट, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन में मास्टरी टेस्ट नहीं देते हम. कंडक्टिंग क्विज इज वन ऑफ द टूल एंड टेक्निक में आते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूशन में. देन एवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स इन ए ग्रेडिंग सिस्टम, इसका और फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का संबंध नहीं है, वेदर इट मे बी ग्रेडिंग सिस्टम और अदर सिस्टम. फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का इसका कुछ रोल नहीं है. देन प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग, फीडबैक देते रहते हैं हम टीचिंग करने के टाइम. आपका इधर प्रॉब्लम है ये क्लियर करो. व्हाइल टीचिंग, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का मेन फीचर है टीचिंग प्रोसेस में हमने फॉर्मेटिव एवेल्युएशन करता है. Process of teaching, at the in between of teaching, while that is the formative evaluation. Providing feedback while teaching, this is also correct activity for formative evaluation. Encouraging the student reflect more, student को encourage कर रहे reflect more, ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये करो स्टूडेंट को. सो इसमें क्या होता है? कंडक्टिंग क्विज सेशन, वही बताया ना, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में क्विज लेना है, डिफरेंट ये लेने. क्विज कब करते हैं हम? आफ्टर द यूनिट, इन बिटवीन द, आफ्टर द मंथ. सो दिस इज द फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. क्विज तो फाइनल सबमेटिव एग्जाम में तो नहीं करते हम. सो क्विज सेशन शुड बी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, डी एंड ई. सो बी, डी, ई आर ऑप्शन सी. समझ में आ गया आपको? ये आपको आंसर पता नहीं हो तो डोंट वरी, क्योंकि ये अप्लाइड वाला है, डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. देन ओनली यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जस्ट यू हैव टू लिसन, देन यू हैव टू रिपीट. समझ लो फॉर्मेटिव एवेल्युएशन का बारे में आपको समझ में. See, it is also known as internal evaluation. It is done during the program before its completion. It focuses on the process, conduct more than once depending on the activity, give student feedback. This evaluation gives the student the feedback regarding his success, failure, achieving instructional objectives. It identifies the learning needs corrected for a teacher. Formative evaluation provides the instructions
MED's formative evaluation is quite helpful in the stage of development. It helps in the providing program. Examples of formative evaluations are unit and test, monthly and test, quarterly test, etc. अभी देखो आपको क्या लगता है, अभी सेम क्वेश्चन। सो अभी आपको समझ में आते हैं। मास्टरी टेस्ट तो नहीं है, मास्टरी मींस यूनिट टेस्ट वो सारे फॉर्मुलेट। मास्टरी टेस्ट मास्टर मतलब मास्टरी ओवर सब्जेक्ट का मास्टरी कितना है वो तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्रोसेसिंग में रहते टीचिंग का। सो ये तो नहीं कर सकते मास्टरी टेस्ट। एट द एंड ओनली वी कैन डू दी मास्टरी ओवर दी दैट। कंडक्टिंग क्विज सेशन कर सकते हैं हम फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन में। एवेल्युएटिंग स्टूडेंट इन ए ग्रेडिंग सिस्टम, वेदर ग्रेडिंग सिस्टम और अदर सिस्टम, इट इज हमको ग्रेड करना है, एवेल्युएशन करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में हमारा इंटेंशन क्या है, लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। एंड फीडबैक से क्या होता है, व्हाइल टीचिंग वी आर एवेल्युएटिंग। feedback, providing feedback while teaching is also formative evaluation. Encouraging student to reflect more, this is also part of the evaluation. बोलते हैं ना किधर किधर प्रॉब्लम है उधर रेमेडियल मेजर्स लेना है, इंप्रूवमेंट करना है, that is the encouragement of student reflect more. So these things B, D and E, these are the correct answer. आपको 50% तो पता चला है क्या है इसका आंसर, क्यों ये होता है। हेलो हेलो हेलो, डोंट वरी, आप खुद कब पढ़ाई करते हैं ना, आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स एंड स्टडी। आप एक बार खुद से पढ़ते, खुद से एक बार रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, आपको एक माइंड में कॉन्सेप्ट बैठते हैं ना, देन अगेन यू सी दिस क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दीज आर द आंसर। आप अभी पहली बार सुन रहे हैं, सो इट्स ओके। मुझे भी पहली बार देखे तो वैसा ही लगता था। अभी आप कैसे कैसे उस, लेकिन आप क्या करना है, पढ़ाई करना है, रिपीट करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने तक ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने को नहीं होता है। That is the what I have to, my intention is to repeat, revise and understand in your own concept. आपको दिमाग में बैठना है, मैं क्या बताया जस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन। सो आपको कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में क्लियर होना है। इट विल हैपन्स ओनली इफ यू रीड द मटेरियल्स एंड यू विल वंस अगेन यू विल रिवाइज द रिकॉर्डिंग्स। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, समझना चीज है ना, ये मेरा हाथ में नहीं, आपका हाथ में। सो मैं कैसे सब्जेक्ट को समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, वो आपका हाथ में। आई कैन गिव मटेरियल एंड आई कैन गिव सपोर्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और एनालाइज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। डोंट वरी, ये किसी को भी पॉसिबल नहीं है एक ही बार सुन के ये आंसर करने के लिए। जस्ट यू हैव टू ट्राई लेटर ऑन, यू हैव टू स्टडी एंड रिपीट, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So next question, given below are two statements, achievement and aptitude test are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. Achievement test and aptitude test, अभी अभी आपने पढ़ाई किया। व्हाट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट। ये स्टेटमेंट क्या है, अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है, ये बताओ, इसका तो आंसर बताना पड़ेगा। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल एग्जाम में, फाइनल टेस्ट में कितना अचीवमेंट किया वो बताते। एप्टीट्यूड टेस्ट इज ओवरऑल स्किल, स्पेशल कोर्स के लिए हमने एलिजिबल है या नहीं है वो बताते। सो अचीवमेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ एग्जामिनीज। अपर लिमिट क्या है उनका, एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। ये करेक्ट है नहीं है, ये पता चलता है हमको। अचीवमेंट्स एंड एप्टीट्यूड डिजाइन इसलिए है, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट असेस द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटीज। abilities, whether he is able or not for the teaching post, कौन सा टेस्ट करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में क्या होता है, अपर लिमिट कितना हाईएस्ट मार्क लिया है वो, 90%, 95%, दैट विल असेस द
अपर लिमिट ऑफ द एग्जामिन इज नॉलेज, अचीवमेंट नॉलेज को मेजर करता है। मैंने 80% लिया, अनदर मेरा कोलीग ने 90% लिया, व्हाट अचीवमेंट टेस्ट इज असेसिंग माय नॉलेज, what aptitude test is assessing my abilities. So this statement, whether it is true or not. Hello, hello, आपको समझ में आ रहा है क्या सेंटेंस तो क्या है? हेलो, प्लीज रिप्लाई। अगर समझ में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनिशियल में किसी को भी पता नहीं चलते, जस्ट दिस विल टेक सम टाइम, डोंट वरी। आपको कुछ तो आइडिया आ रहा है, नहीं आ रहे, और अदरवाइज आई विल डू दिस 2-3 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर यू, वंस यू कंप्लीट द रीडिंग मटेरियल एंड रिकॉर्डिंग, आई विल डू। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड दिस इज projective test, personality test are designed to measure the typical behavior and characteristic of the examinee. These concepts we have not covered. What are the projective test and personality test? हमने अभी ये कवर नहीं किया, ये क्या है हमने इसका आंसर करने के टाइम, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, we come to know that regarding that concept while solving the question answers only. अगर ऐसे कॉन्सेप्ट को हम थ्योरी में डाल के पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए सॉल्विंग द क्वेश्चन के टाइम अगर ये प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आ गए, उसका बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. सो डोंट वरी, आई विल डू द I will type because the last minute I have typed these things. I will give the correct format in the next class में. मैं ये दोनों ये एग्जाम्पल को with this concept I will explain. Then you have to answer this question at least. Which of the following is an example of maximum performance test? Personality test, projective personality test, aptitude test, interest and attitude scales. एप्टीट्यूड टेस्ट. Yes. So aptitude test क्या है? ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस को चेक करता है. दैट्स व्हाई एप्टीट्यूड टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई स्पेशल कोर्स को एंश्योर करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट आर नीड. व्हाट आर द पर्सनालिटी टेस्ट? ये सारे क्या है? पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट हम आई विल एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन कंटेक्स्ट में. आई विल एक्सप्लेन what are the personality and projective personality test, and I will take this question in the next session. Please remember me. I will type it correct, and I will also cover the what is the this test. So this answer is aptitude test. All of you understood? Any doubt? This question इसलिए ऐड किया लास्ट मिनट में, so it will help to understand the concept. That is the intention. लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला. As session start, I will type side by side. So that's why it takes some mistakes. So आपको समझ में आ गए? I will share the today's units, and already I have shared this document. This unit, these notes I will share in the WhatsApp group. Please go through this one. You can read whole unit if you're interested, but important is approaches to evaluation to diagnostic summative evaluation, up to this distinction between formative and summative evaluation. Up to this you have to read. It is needed for understanding our concept. अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको गो थ्रू करना है, यू कैन रीड दी होल थिंग्स, दीज थिंग्स. इसमें नॉन रेफरेंस्ड एवेल्यूशन, क्राइटेरियन एवेल्यूशन भी है. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. यू कैन आल्सो रीड दीज थिंग्स.
norm reference and criterion reference. So if you understood by reading these things, you can yourself go through the difference between the norm referenced and criterion referenced evaluation. इसका बीच में difference क्या है आपको समझ में आता है. अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो we will discuss in the next class. So self reading शुरू करना है आपको. That is the important. अगर self reading नहीं करते तब तक you are unable to solve the questions. मेरा टीचिंग से, मेरा क्लास से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है, आपको एक वे मिलता है, बट बेस्ड ऑन दिस थिंग्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. तब तक आपका सेल्फ लर्निंग, सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं करते आप, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. समझ में आ गए? आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं दिस क्लास विल हेल्प, बट आप खुद कब तक पढ़ाई नहीं करते, ट्राई नहीं करते समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को, इट इज नॉट हेल्पफुल. That is my opinion. So all of you understood? Can I stop the reading recording? Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वीडियोस, कुछ भी मिलता है आजकल. ओपन सोर्सेस बहुत है, नोट्स के लिए कुछ कमी नहीं है मेरे पास. आई विल गिव दी ऑल दी नोट्स, बट इससे प्रॉब्लम क्या होता है,